Morning, children. This is your teacher Nafisa Aidanwala. Today, children, again we are going to have a session in Bal Bharti, and today we are going to do the third part of your lesson, Happy Prince. In the previous two lectures or session, we did how Happy Prince helps the woman whose son is sick. Then, in the second part, we saw that how Happy Prince helps the writer and the little girl by giving off his two eyes that was studded with sapphires. Now today, and we did what? That the Happy Prince had gone blind. And when he tells Swallow to go back to Egypt, Swallow refuses in the second part, right? Why? Because he said that now you cannot see, so I cannot leave you. So this was a very right decision. If you Because the swallow has also started loving Happy Prince for all good things he was doing for his people. And though it was very cold, he stayed with Happy Prince. Now let's see what happens after he starts staying with Happy Prince. See how that love and compassion, children, is shown in this lesson. And today we will start with page number 49 and complete page number 50. Right? Now let's get started. The next day he stayed with the prince. Abhi Swallow was staying with the prince. He told the prince stories about strange land. Now Swallow was as a migratory bird, he would tell everything about the different places he had been, the stories of those places. And this is how they used to pass. But one day what happened? Swallow said, sorry, Prince said, "Dear little bird," said Prince, "you are telling me about strange and wonderful things. You are telling me some strange and wonderful thing about other places. But the suffering of man and woman is stranger. मुझे क्या जानना है? Man and woman की suffering is मेरे लिए और strange बात होगी. He is requesting the swallow to fly over to my city. Little bird, tell me what you see there. He is telling कि तू जो देखता है मुझे आके बता. So the swallow flew over the great city. He saw poor people sitting at the gate. उसने क्या देखा कि सिटी के गेट के पास बहुत सारे गरीब ठंडी में बैठे थे. राइट उनको रहने के लिए घर नहीं था, तो वो ऐसे ही रास्ते में बैठे थे. He flew into the dark street. और जब वो अंधेरी गलियों से फ्लाई हो रहा था, He saw white faces of hungry children. उसने वहाँ पे भी क्या देखा? भूखे बच्चे को देखे. Their eyes were filled with sadness. Then he flew under the bridge. अभी सिटी में ब्रिज भी होते हैं बराबर, तो he flew under the bridge. And ब्रिज के पास उसने क्या देखा? ब्रिज के अंदर there were two little boys. दो छोटे से लड़के थे. They were lying close to each other. वो एक दूसरे को चिपक के बैठे थे. टू कीप वार्म, बिकॉज ठंडी थी तो एक दूसरे के जिस्म की गर्मी लगती है, तो वो एक दूसरे को हग करके बैठे थे. एंड दे वर टॉकिंग, वी आर सो हंग्री. दोज टू बॉयज वर टॉकिंग कि हमें कितनी भूख लगी है. और उसी वक्त क्या होता है, एक सिटी का जो गार्ड है आता है. यू कैन नॉट लाई देयर, साउटेड द गार्ड. गार्ड उसको डांटता है बच्चों के कि तुम लोग यहाँ पे नहीं सो सकते. Who is telling? The guard is telling to those two boys. Then the swallow flew back and told the prince. Now swallow जो है वापस प्रिंस के पास आया और उसने सभी चीज़ बातें जो हैं प्रिंस को बता दी. Now swallow is also very sad. Now Prince thinks and he tells Swallow that I am covered with fine gold. Right? मेरा पूरा जिस्म जो है सोने से बना है, मेरे कपड़े.
टेक इट ऑफ पीस बाय पीस, एक एक पीस तू निकाल मेरे कपड़ों में से, छोटे छोटे पीसेस, एंड गिव इट टू माई पुअर पीपल, मेरे जो भी गरीब लोग हैं सिटी में सबको तू बांट के आ, गो एंड डिस्ट्रीब्यूट. Now let's see what happens. The swallow pulled off the gold until the prince looked grey and ugly. Now swallow छोटे 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 पीसेस लेकर सबको देता था, और उस वक्त देता रहा कि जब प्रिंस के सब कपड़े निकल गए. एंड द प्रिंस वॉज लुकिंग ग्रे एंड अगली. वो मेटल का बना था ना, तो अभी मेटल कैसा होता है, ब्लैक. जैसे इफ़ यू कैन टेक आयरन, इट इज़ ऑलवेज ब्लैक इन कलर, ग्रे इन कलर. द स्वेलो टुक द गोल्ड टू द पुअर, और वो हर गरीब को वो गोल्ड के पीसेस देता था. एंड द चिल्ड्रन फेसेस बिकेम ब्राइट, और वो गोल्ड के पीसेस देखकर जो बच्चे के हाथ में जब गोल्ड पीसेस आते हैं वो बहुत खुश होते थे, ब्राइटर. एंड वो सोचते हैं हाँ चलो अभी हमें खाने को मिलेगा, वी हैव द ब्रेड नाउ, अभी हमें खाने को मिलेगा. दे क्राइड विथ हैप्पीनेस. हु इट इज़ व्हेन यू क्राई विथ हैप्पीनेस, क्राई मीन्स रोना नहीं, वो खुश होकर जोर से बोलते थे. देन द स्नो केम, अभी स्नो गिरना शुरू हो गया. आइस आइस फॉलोड द स्नो, और स्नो के साथ बर्फ़ भी गिरने लगी. हंग डाउन फ्रॉम द रूफ, और सबके घरों के जो रूफ्स थे स्नो से कवर्ड हो गए. एवरी वन वॉर थिक कोट, सब ने गर्म कपड़े पहन लिए अपने घरों में. बाहर निकल रहे थे तब भी वो स्वेटर्स, फेदर कोट्स पहनते थे. द लिटिल स्वेलो बिकेम कोल्डर, उसको बहुत ठंडी लग रही थी, बिकॉज ही कुड नॉट विथस्टैंड दैट कोल्ड वेदर. इसीलिए तो वो इजिप्ट जाना चाहता था. बट ही चेंज हिज डिसीजन एंड सेड कि अभी कुछ भी हो जाए मैं लिटिल प्रिंस के साथ ही रहूँगा. He did not leave Prince because he loved him very much, but he was dying. अभी वो ठंडी के मारे मर रहा था. And one day, what is the swallow telling little prince? Goodbye, little prince, he said. उसने प्रिंस को goodbye कहा. I am glad you are going to Egypt. अभी प्रिंस तो देख नहीं सकता, तो प्रिंस ने क्या सोचा कि चलो अच्छी बात है तू इजिप्ट जा रहा है. यू हैव स्टेड टू लॉन्ग, तूने बहुत दिन मेरा साथ दिया. यू हैव स्टेड टू लॉन्ग, मेरे साथ बहुत दिन रहा. द स्वेलो सेज आई एम नॉट गोइंग टू इजिप्ट, सेड द स्वेलो. आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ गॉड, मैं भगवान के घर जा रहा हूँ, गॉड के घर जा रहा हूँ. इट फेल डाउन एट इट्स फीट, और हैप्पी प्रिंस के कदमों में वो गिर गया. और जैसे ही वो मर गया उसी वक्त एक ज़ोर की आवाज़ आई. देयर वॉज अ स्ट्रेंज साउंड इन साइड द स्टैचू के अंदर स्ट्रेंज, वो क्रैकिंग जो होता है, जो जब कोई चीज़ टूटती है तो जो आवाज़ आती है ना, क्रैक की आवाज़ आई. और वो क्या टूटा था, हैप्पी प्रिंस का दिल टूट गया था. द मेटल हार्ट ब्रोक इनटू 2 पीसेस, और उसका जो दिल था वो 2 टुकड़ों में बट गया. इट ब्रोक इनटू 2 पीसेस. नाउ अभी जब अर्ली मॉर्निंग हुई, ये रात को हुआ, जब अर्ली मॉर्निंग हुई, इम्पॉर्टेंट मैन इन द सिटी. इम्पॉर्टेंट मैन मीन्स कौन हो सकता है, किंग के लोग, राइट. They were walking with the 2 of his friends. That is, you can say counselors or guards or a police, whatever. He looked at the statue. उन्होंने statue, every day जो भी जाता था statue को देखता था. But today they saw the statue. They looked up. The happy prince does not look very bright. What did they say? कि आज ये happy prince bright नहीं लग रहा है. He said, the red stone has disappeared. His eyes are not there. एंड ही इज़ नॉट गोल्डन, अभी उसकी आंखें भी नहीं है, रेड स्टोन भी नहीं है, कपड़े भी गोल्डन नहीं हैं. ही लुक्स लाइक अ बेगर, एक भिखारी की तरह दिख रहा है. और उसका जो फ्रेंड था उसने कहा हाँ यस तू सही बोल रहा है कि यस ही डज. एंड हियर इज़ अ डेड स्वेलो एट हिज एंड. देखो उसके पैरों के पास एक मरा हुआ स्वेलो भी पड़ा है, सेड द ऑफिसर.
We must make an order. Officer is a foolish person, right? He said कि हमें एक order pass करना चाहिए, किसी को यहाँ पे मरना allowed नहीं है. Is it possible, children? No. So it is a wrong thing, no? मौत तो कहीं पे भी आ सकती है. We must make an order that birds cannot die here. They pulled down the statue. उन्होंने पूरा statue को गिरा दिया of a happy prince. And वो पूरा जो metal का statue था उसको fire में डाल दिया. The stream of bright metal, अभी वो metal का था तो metal पिघल गया fire के हिसाब से. It ran out. This is strange, said the workman. और जैसे वो पिघल रहा था, लेकिन जो लोगों ने उसको डाला था स्टैचू को, उनको एक बात अजीब लगी जो वर्क कर रहे थे फर्नेस में. This broken piece in the middle of the statue has stayed. देखिए सब कुछ मेल्ट हो गया, लेकिन ये स्टैचू के मिडल में जो पार्ट है वो पिघल नहीं रहा है. तो ये हमें उसको फेंक देना चाहिए. अगर नहीं पिघल रहा तो जाने दो, फेंक दो. And children, do you all know what was that? In the middle of the statue? Yes, children, it was the heart of the happy prince. So they threw it away. It with a dead bird. वो dead bird थी, उसके साथ उसको फेंक दिया. God said to his servants, bring me the 2 best things in the city. उसने कहा कि मेरे पास 2 प्रेशियस और अच्छी चीज़ लेके आओ. They brought the broken heart and a dead bird. Yes, you have brought them. And जब वो angels, servants means angels, जो happy prince का heart और bird को लेके गए, तो God was very happy, क्योंकि God ने भी उसके servants की परीक्षा ली और उसको ऐसे ही कहा कि तुम जाकर मेरे लिए 2 अच्छी चीज़ें लेकर आओ. So the God was happy and said, yes, you have brought the right things. Said God, this little swallow will sing forever in my garden. ये जो swallow है मेरे garden में sing करेगा. And the happy prince will stand in my city of gold. और ये happy prince जो है मेरी city of gold में उसका statue वैसे का वैसा ही रहेगा. Oscar will. So now children, you all got it, कि how you are repaid by God if you help others. See, even happy prince was repaid by God, right? He was put up into heaven, paradise. So आप अगर छोटा काम भी करते हो तो don't think कि हमें उसका फल नहीं मिलेगा. Definitely God will pay all your good deeds 10 times, 1,000 times. Okay, children. So what you learn in this lesson, that we must love others, we must help others, and we should be generous and kind towards others. Okay, children. Now, children, let's do some workshop. That is why I gave you in the previous lecture the questions of this page number 4950, because I wanted to do workshop in this lecture. Let's get started, children. Now, on your page number 51, say whether the statements are true and false and correct the false one. And the second question is homophones. You have to write homophones. Then in the third question, there are certain questions again given. And then you have grammar also, but that we will be doing in the other video. Let's get started. Say whether the sentences are true or false and correct the false one. जो गलत है उसको correct करो, जो right है उसको रहने दो. The writer of the story is William Black. Is it William Black? No, it's Oscar Wilde. So it is false statement. Everyone admired the statue of Happy Prince. True. C. The mother was working when the swallow brought the yellow jewel. Which jewel it was? Red jewel. D. The 2 best things the servants brought to God were gold and jewels, stones. False. The 2 best things the servants brought to God were the
broken heart, and a dead swallow. Now, homophones, find from the story homophones of the following words, children. Words that sound same. Homophones are what? उसका sound जो है जब आप बोलते हो it's the same but the meanings and the spellings are different. And that is weak. Weak means kamzor. And another is week, days of the week. There, THEIR, there मतलब उसका, और there मतलब वहाँ पे. So these are the words which sound same, meanings are different, spellings are different. Blue, you blew a balloon, and blue is a color. Sea, sea is a seashore, right? दरिया जिसको बोलते हैं समुंदर. And see means to see, देखना. Red means पढ़ना, and red is a color. Waste, बेकार, कोई चीज़ बेकार करना, and waste is your कमर. No, मालूम होना, I know this thing. And no means when you refuse, no, I don't want to drink milk. Not, not is कोई चीज़ की गट्ठी मारना, and not मतलब refuse. Through मतलब कुछ फेंकना, and through मतलब उसके अंदर देखना. Right. Now your right has two meanings. One is your right side, and right is the correct answer. And another right is to write in your book. Now let's move further, children, for the question answers. Where was the Happy Prince statue situated? Right? Looks located, you can say. Sorry, children. The statue of a Happy Prince was located high above the city on the tall column. Why did the swallow decide to stay under the statue of the Happy Prince at night? Yes, this is question number B. Answer to it is, the swallow decided to stay under the statue of a Happy Prince as he thought there was a plenty of fresh air as the statue was high up. Why was the prince sad? Question number 3. C, that is. Answer. The prince was sad to see all the unhappiness in the city. His heart was made up of so cheap metal that also felt pain. Right, children? उसको भी दर्द हो रहा था. What was the first task given to the swallow? D. The first task given to the swallow was to give a red jewel of the prince's vest to the mother of the ailing boy who was hungry. E. Question number E. To whom did the prince give the 2 gemstones of his eyes? The prince gifted the 2 gemstones of his eyes, one to the young writer who could not complete his writing, and to the little girl selling eggs whose eggs had fallen and broken. What decision did the swallow finally make? Was it a wise one? Comment, आपको बताना है. It's a personal response question, but I've given you the answer. The swallow finally decided to stay back with his prince as he loved the prince very much. It was a wise decision because all these days both of them had been helping one another in their mission to give happiness to others. Both of them had become very close to each other. G. Why did the swallow finally decide not to leave the prince? The swallow finally decided not to leave the prince because it was dying. Yes? What is the message do you get from this story? हमें क्या मैसेज मिलता है ये स्टोरी से? The message that we get from the story, Happy Prince, is that wealth is not everything. In spite of all the wealth, Prince was not happy. It teaches us love and compassion towards the poor and the sufferings. It throws light on the sacrifice of the others. So today, children, we are done with the lesson. I hope you have really enjoyed this lesson. Thank you, children, and please do write down the question answers which will be posted to you in your notebook. Love you all.